Good morning, all of you. So let's start. So now I will take up. My name is Sahil Goyal, and I will take up two subjects with you. The first is social issues, and then I'll take governance also. Both the papers I'll take. Social issues for GS paper 1 and governance for GS paper 2. Okay. Both the subjects are very easy. Only you have to learn. Very easy to understand, but difficult to write. That is the problem with these subjects. They're very subjective and difficult to write. And there's a trend from past 3-4 years that very tough questions are asked from Indian society, specifically Indian society. Very tough questions they're asking. So it becomes very important to have in-depth understanding of this topic. To understand newspaper also, you need to have very good understanding of the Indian society. जैसे caste system क्या है, what is the idea of reservation, why reservation for EWS, all these things I will discuss in class. Is it okay? It is so around GS paper 1 में 60 to 70 marks out of 250 are asked from Indian society topics, and GS 2 I will discuss later. So this is there, and your Indian society is also important for your essay paper. Essay part B is usually from social issues, जैसे gender, women issues, education, health, okay, capitalism, inequality, ये सारी चीजें part 2 में पूछी जाती हैं, which is part of Indian society. Is it okay? So this is, yes, I will take a whole of Indian society. Yes, I should greet online students also. Good morning, online students. Please switch on your cameras, all of you. Yes. तो पूरा इंडियन सोसाइटी आई टेक, ऑलमोस्ट पूरा गवर्नेंस ऑल्सो आई टेक. अगर टाइम मिला तो अदरवाइज आई विल गिव इट टू समबडी एल्स फॉर गवर्नेंस. बाकी इंडियन सोसाइटी तो आई टेक कंप्लीटली. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज इंडियन सोसाइटी में आई टेक अराउंड 10 क्लासेस फॉर इंडियन सोसाइटी. अब 10 क्लासेस में हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, उसको डिटेल में भी जाएंगे नहीं ज्यादा. आई विल टेल यू व्हाट वी विल डू इन फर्स्ट 5 क्लासेस. ओके, रोड मैप फॉर फर्स्ट 5 क्लासेस. सो इन 5 क्लासेस आई विल कवर 5 चैप्टर्स. सो व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर? प्लीज राइट सिलेबस. द फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी. मतलब इसमें हम देखेंगे व्हाट इज सोसाइटी, सोसाइटी क्यों है, कैसे एग्जिस्ट करती है सोसाइटी, व्हाट आर वैल्यूज, व्हाट इज कल्चर, हाउ इंडियन सोसाइटी इवॉल्व. तो इसमें हम ये भी देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर. ऐसा क्या खास है इंडियन कल्चर में, व्हाट आर इट्स सेलिएंट फीचर्स. दिस इज चैप्टर 1. आज ही फिनिश कर देंगे ये. चैप्टर 2 कास्ट सिस्टम. इसमें हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे. कास्ट सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, व्हाट इज वर्ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ना एंड कास्ट, हाउ वर्ना गॉट कन्वर्टेड इनटू कास्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कास्ट, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर कास्ट सिस्टम. इज इट ओके? तो इसको डिटेल में पूरा अपन डिस्कस करेंगे. देन चैप्टर नंबर 3 आई विल डिस्कस हु आर ओबीसीज. ओबीसी कौन होते हैं, एंड आई विल आल्सो गिव यू द आइडिया ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया. रिजर्वेशन क्यों होता है, कैसे होता है, इसका भी पूरा आई विल गिव यू इन डिटेल डेप्थ एनालिसिस. चैप्टर नंबर 4 आई विल टॉक अबाउट अनटचेबिलिटी. हैव यू हर्ड अबाउट अनटचेबिलिटी, अनटचेबल्स, इनके बारे में, ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी, कैसा है अनटचेबिलिटी, क्यों होती है अनटचेबिलिटी, ऑल दीज इश्यूज आई विल डिस्कस. और अनटचेबल्स में बेसिकली हम बात करेंगे शेड्यूल कास्ट की. इसमें हम दलित मूवमेंट भी करेंगे. दलित मूवमेंट, SCs आर आल्सो कॉल्ड एज दलित्स, यू नो दिस. देन चैप्टर नंबर 5 we will talk about tribes. I will talk about tribes. ट्राइब्स में, ट्राइब्स को क्या बोलते हैं, एसटीज शेड्यूल ट्राइब्स. तो इनको डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 टू चैप्टर 5. आगे समझ में. अब ये तीनों वल्नरेबल सेक्शंस हैं, ओबीसीज, एससीज एंड एसटीज. तो तीनों वल्नरेबल सेक्शन आल्सो वी विल कवर विद दीस चैप्टर्स ओनली. तो आपका एक टॉपिक है वल्नरेबल सेक्शंस, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसीज आते हैं. तो उसको पूरी तरीके से आई विल कवर हियर ओनली. क्लियर ऑल ऑफ यू? So this is the agenda for the next 5 classes. This is what we will do. So let's start now. Give a heading. What is society? What is society? तो कम लिखेंगे तभी लिख पाएंगे. सारी रामायण नहीं लिखनी है जो मैं बोल रहा हूँ. Is it okay? Write less and write fast. Initial first 2 class I'll take slow, then I'll be very very fast. Is it okay? So you have to pick up the pace, and after 1 hour I'll ask you doubts. Okay, fine. 1.5 hour I'll ask doubts. तो सोसाइटी क्या है, व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी इज नथिंग बट वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स. सोशल रिलेशनशिप्स का एक वेब है. नाउ व्हाई दिस वेब इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द रीजन that people enter into social relationship with each other? The reason is they are interdependent on each other. And why they are interdependent on each other? हाँ, क्यों है? Because of the concept of division of labor. People become interdependent on each other. Have you heard about division of labor? Dividing work among different sections of society. A very crude example of division of labor is there are farmers, doctors, engineers. सुना है? तो engineers are going for production of machines, farmers are going for production of crops, doctors are understanding your body. Is it okay? Providing you treatment for your body problems. तो society ने क्या किया है, work को आपस में क्या किया है, divide. And because work has been divided, people become what? Interdependent. अब भाई farmer is dependent upon whom? Doctor. अगर कोई body problem हुई, doctor for food requirements are dependent upon whom? Farmers. So because of this interdependence, people enter into what? Social relationships with each other. Clear all of you? Now, next point you write. In order to maintain social relationships, society creates rules and regulations.
सोसाइटी बनाती है रूल्स रेगुलेशंस which are also called as values, which are also called values. Society also creates social institutions. सोसाइटी एक बार डिवीजन ऑफ लेबर करने के बाद सोसाइटी क्रिएट्स व्हाट, रूल रेगुलेशंस, और रूल रेगुलेशन के साथ क्या बनाती है, सोशल इंस्टीट्यूशंस. तो अब रूल रेगुलेशन का क्या फंडा है, लिसन ऑल ऑफ यू केयरफुली. द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी शुड दे फॉलो रूल रेगुलेशन और नॉट. यस, तो लिखो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस which otherwise would result in, अगर नहीं फॉलो की तो क्या होगा, yes, which otherwise would result in chaos and conflict, in chaos and conflict. Are you getting? Next. Now how society ensures that members follow rules and regulations. भाई हमने अभी पॉइंट लिखा कि members को रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं, बट सोसाइटी कैसे इंश्योर करे that members follow rules and regulations, कैसे करे? Yes, so उसके लिए सोसाइटी ने क्या बनाया है, सोशल इंस्टीट्यूशंस. इज इट ओके? तो लिखो सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, मैरिज, ये कंट्रोल करती हैं इंडिविजुअल्स को. फैमिली, मैरिज, स्टेट, स्टेट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल, ये सारे इंस्टीट्यूशंस का काम है इंडिविजुअल को किस में रखना, कंट्रोल में रखना. इज इट ओके? तो सोसाइटी क्रिएट्स सोशल इंस्टीट्यूशंस in order to socialize, in order to socialize the members with rules and regulations, socialize the members with rules and regulations. Underline the word socialize. Are you getting this much? Now socialize the members means members, नए members को rule regulation सिखाना. ये किसका काम है, social institutions. So what is the primary institute of socialization? Family. तो लिखो primary institute of socialization, institute of socialization is family. The secondary institute of socialization, बच्चा फिर आगे रूल रेगुलेशन सोसाइटी के कैसे सीखता है, स्कूल. द सेकेंडरी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशलाइजेशन इज स्कूल. तो ये चल रहा है. तो एक तो सोशलाइज करती है, दूसरा कंट्रोल करती है, कंट्रोल थ्रू पनिशमेंट्स. अगर रूल जानने के बाद भी आप फॉलो नहीं करते रूल रेगुलेशन तो यू विल बी पनिश्ड. सो ये काम मेजरली किसका है, स्टेट. दिस इज मेजरली द वर्क ऑफ स्टेट. आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? सिंपल चीज की कहानी है. तो सोसाइटी ने सबसे पहले क्या किया, डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर से लोगों में क्या बनाए, सोशल बॉन्ड्स. अंडरस्टैंडिंग और नॉट? नाउ वन सोशल बॉन्ड्स आर क्रिएटेड, इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल बॉन्ड्स सोसाइटी हैज क्रिएटेड व्हाट, रूल्स एंड रेगुलेशंस. नाउ इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, the society goes for two things, socialization and control over the members of the society. Fine all of you? Now can these rules regulations change over a period of time or not? Yes, तो लिखो members of society, members of society can demand change, of society can demand change of rules and regulations, demand change of rules and regulations over a period of time, over a period of time. Is it okay or not? Now ये जो मेंबर्स हैं इनको क्या कहते हैं हम, लिखो दीज मेंबर्स आर कॉल्ड, मेंबर्स हु आर डिमांडिंग चेंज, मेंबर्स आर कॉल्ड सोशल रिफॉर्मर्स, मेंबर्स आर कॉल्ड सोशल रिफॉर्मर्स. जैसे पहले रूल रेगुलेशन क्या थे, समझ में आ रहा है ये क्या किसकी तरफ, कैन यू नेम सम सोशल रिफॉर्मर्स? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यस, ये सारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं. दे वांटेड चेंज इन रूल्स एंड रेगुलेशंस. व्हाट रूल एंड रेगुलेशंस? लाइक देयर शुड बी नो अनटचेबिलिटी, यस, नो सती प्रैक्टिस, देयर विडोरी मैरिज शुड बी अलाउड, यस, चाइल्ड मैरिज टू बी अबॉलिश्ड. तो ये सारी चीजें दे वर डिमांडिंग चेंज ऑफ व्हाट, रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन मेंबर्स डिमांड चेंज, विल द चेंज हैपन इमीडिएटली और इट विल, यस, तो लिखो व्हेन मेंबर्स डिमांड चेंज, देयर इज नेगोशिएशन बिटवीन, देयर इज नेगोशिएशन बिटवीन, किस किसके बीच में नेगोशिएशन है, नेगोशिएशन बिटवीन ओल्ड रूल्स एंड न्यू रूल्स, and new rules. If new rules are accepted, if new rules are accepted, अगर नए रूल्स को एक्सेप्ट कर लिया गया तो there is social change. Very good, there is social change. Please underline this word, social change. Yes. Fine, clear? अब आज की डेट में कौन डिमांड कर रहा है सोशल चेंज? देखो इन प्रेजेंट टाइम्स एनजीओस आर द न्यू सोशल रिफॉर्मर्स. एनजीओ सुना है? एनजीओस आर द न्यू सोशल रिफॉर्मर्स. तो जैसे एनजीओस के एफर्ट्स की वजह से देखो, बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स देयर हैज बीन सोशल चेंज. सोशल चेंज क्या सोशल चेंज आया है? एबॉलिशन ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, देन सेक्शन 377 बीइंग डिक्लेयर्ड एज व्हाट, नल एंड वॉइड. सेक्शन 377 इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, सुना है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक? इंस्टेंट, तत्काल. सेक्शन 377 बीइंग डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड. ठीक है. एंट्री ऑफ वुमेन इनसाइड व्हिच टेंपल? यस, वेरी गुड. एंट्री ऑफ वुमेन इनसाइड सबरीमाला टेंपल. तो ये सब चेंज, जैसे ओल्ड रूल क्या कहता है, वुमेन शुड नॉट बी अलाउड इनसाइड सबरीमाला टेंपल. अब नया रूल क्या है, वुमेन शुड बी अलाउड. तो ये सारे रूल्स किसके एफर्ट्स की वजह से चेंज हुए? एनजीओस.
इज इट ओके? और एनजीओ ये रूल्स कैसे चेंज करवाती हैं? द बिगेस्ट टूल इन देयर हैंड्स इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। तो अभी ये सब नहीं लिखना, बट आपको समझ में आया व्हाट इज सोशल चेंज? सो मेंबर्स डिमांडिंग चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ नेक्स्ट लिखिए, अच्छा, डू यू रिमेंबर दिस इक्वेशन? रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट? जस्ट लिसन, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? वैल्यूज। सो व्हाट आर वैल्यूज? लिखो, व्हाट आर वैल्यूज? When rule regulations are followed, when rule regulations are followed by a particular society, by a particular society over a long period of time, over a long period of time, underline long period, they become values, they become values. Is it okay? तो रूल रेगुलेशन जब बहुत लंबे टाइम से फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं वैल्यूज। अरे तुम इधर ध्यान दो, वो बैठ जाएगी, सबको टेंशन हो गई। आओ चलो नेक्स्ट। इज इट ओके? नाउ चलिए, अब क्या होते क्या हैं ये वैल्यूज, क्या करते हैं? व्हाट रोल डू दे प्ले इन द सोसाइटी? लिखो, दे हेल्प अस डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दे हेल्प अस डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट, दे हेल्प अस डिसाइड आवर प्रेफरेंसेस, दे हेल्प अस डिसाइड आवर प्रेफरेंसेस। क्या करना है क्या नहीं, कौन बताएगा हमें? वैल्यूज। दे हेल्प अस चूज आवर प्रेफरेंसेस, किसको प्रेफरेंस देनी है, जॉइंट फैमिली को या न्यूक्लियर फैमिली को, ये सब कौन बताता है हमें? हमारी वैल्यूज। अरे ओके और नॉट? नेक्स्ट लिखिए अब इसमें, वैल्यूज आर रिलेटिव इन नेचर, वैल्यूज आर रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव इन नेचर का मतलब है कि वैल्यूज चेंज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। लिखो, वैल्यूज चेंज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। So what is true for one society may what is okay for one society might not be okay for another society. Is it okay? Simple to understand. So society S1 can have value system V1, society S2 can have value system V2. Is it okay? लिखो, culture is derived, next point same values में लिखना है, culture is derived from our values, culture is derived from our values. So what is the source of culture? Values. So can I say when values will change, culture will change. Is it okay? तो इसका एग्जांपल अभी मैं बताऊंगा, बट पहले लिखिए what is culture, then we will understand. So we have seen what are values, we have seen what is society. Now we move to the next component, what is culture. तो क्या है culture? कुछ नहीं होता, culture is a way of life. Culture is a way of life. That is how people do things. How people do things in a particular society. People do things in a particular society. तो गर्म पानी मंगवा, ठीक है? तो हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, क्या आर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या ऐसा म्यूजिक सुन रहे हैं, ये सब हमारा किसका पार्ट है? कल्चर। इज इट ओके? सो लिखो, कल्चर इंक्लूड्स ड्रेस, ड्रेस, लैंग्वेज, फूड, आर्ट फॉर्म्स, इन ब्रैकेट यू राइट आर्ट फॉर्म्स। क्या क्या इंक्लूड होता है आर्ट फॉर्म्स में? आर्किटेक्चर, डांस, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, डांस, म्यूजिक, ठीक है ना? तो ये सब आर्ट फॉर्म्स हो गए। आर्ट फॉर्म्स कॉमा, क्लोज द ब्रैकेट, कॉमा, फैमिली, रिलीजियस रिचुअल्स, मैरिज, टाइप ऑफ मैरिज, मतलब हमारे शादी को कैसा मानते हैं, वो हमारा पार्ट ऑफ कल्चर है। तो मैरिज कॉमा कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, मैरिज कॉमा कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इज इट ओके? दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कल्चर। डज कल्चर वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी और नॉट? यस, क्योंकि क्या चेंज हो जाती हैं? वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी विल गिव वैल्यू टू इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म एंड देयरफॉर वी हैव जॉइंट फैमिली कल्चर। अगर मैं वेस्टर्न सोसाइटीज की बात करूं, दे विल वैल्यू इंडिविजुअलिज्म एंड देयरफॉर व्हाट काइंड ऑफ फैमिली कल्चर दे हैव? न्यूक्लियर फैमिली कल्चर। इज इट ओके और नॉट? सो व्हेन वैल्यूज चेंज, व्हाट इज चेंजिंग? कल्चर इज चेंजिंग। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। क्लियर? नाउ इसमें एक नया वर्ड आया है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। अंडरलाइन दिस वर्ड, कस्टम ट्रेडिशन। अब ये क्या है? व्हाट आर कस्टम्स? बोथ आर सेम, both are same only, custom and tradition both are same, they can be used interchangeably. Clear? So what are customs? लिखो, practices being followed, practices followed over a long period of time, over a long period of time, full stop. When it is passed from generation to generation, when it is passed from one generation to another generation, it becomes what? It becomes tradition. तो हमारे traditions जैसे I'll give you a very simple example of our custom. When we greet others, we do namaste. So doing namaste is part of our tradition. When we greet elders, we touch their feet. So this is part of our tradition, custom. Is it okay? So India में tradition के examples लिखिए। Caste system, सुना है? Caste system, has it been followed over a long period of time or not? Yes. So caste system, comma, untouchability, patriarchy, सुना है? Patriarchy. Then after patriarchy, we have child marriage. अभी तक चल रही है. Some states, poor states like Rajasthan, Bihar, yes. जॉइंट फैमिली, यस, जॉइंट फैमिली। तो ये सब हमारे कस्टम्स ट्रेडिशंस जो लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं। इज इट ओके? ये है। नाउ लिखो, द सोर्स ऑफ कस्टम्स इज, नाउ यू राइट, द सोर्स ऑफ कस्टम्स इज, ये कस्टम्स आते कहां से हैं? इज रिलीजन। सो अंडरलाइन दिस वर्ड, रिलीजन। अब मुझे बताओ, मैंने कहा कि रिलीजन से क्या निकल के आ रहे हैं हमारे? कस्टम्स।
Can I say that when religion will change, what will change? Customs will change. So R1 religion will have custom C1, R2 religion will have custom C2, R3 religion will have custom C3, and customs are part of culture. Customs are part of culture. Now लिखो, अब एक लाइन लिखिए. Sometimes law, सुना है law? Who passes law? Parliament, state, yes. Sometimes law, underline this word, is based on customs. Law is based on customs. In that case, it is called as, when we derive a law from customs, in that case it is called as what? Yes, customary law. An example of customary law is Hindu Marriage Act. सुना है? Hindu Marriage Act 1955. अभी जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल हाउ इट इज बेस्ड ऑन कस्टम्स. दो इट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, बट पार्लियामेंट ने भी जब लॉ बनाया तो किसको ध्यान में रख के लॉ बनाया? कस्टम्स. सो वन कस्टमरी प्रैक्टिस इन हिंदूज इज दैट द एज ऑफ boy during the time of marriage should be more than the age of girl to ensure patriarchy. The age of boy should be more as compared to age of the girl. इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट में मिनिमम एज फॉर बॉयज कितनी रखी गई है? 21, एंड मिनिमम एज फॉर गर्ल्स इज हाउ मच? 18 years. तो हमारे जो कस्टमरी लॉज हैं वो किसके हिसाब से बने हैं? कस्टम्स. लिखो, कस्टमरी लॉज mainly deal with personal matters like marriage, divorce, inheritance. इन सारे पर्सनल मैटर से adoption. So see here, there is one more way of understanding this point. That on these subjects, listen carefully, all of you please look at board. On these subjects, the laws are made as per what? Customs. So on these subjects, India में customary laws हैं. Is it okay or not? And customary laws are based on what? Customs. And what is the source of customs? Religion. So can I say when religion will change, what will change? Customs will change, and therefore every religion will have its own customary law. CL1, CL2, CL3. See this. So Hindus will have different customary laws, Muslims will have different customary laws, Christians will have different customary laws. क्योंकि religion change होने की वजह से क्या change हो जाते हैं? Customs. और customs change होने की वजह से customary laws will change. तो मैं जैसे मैंने हिंदूज का आपको एक customary law बताया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955. ऐसे ही मुस्लिम्स का एक है शरीयत एक्ट 1937. शरीयत एक्ट 1937. अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट एक फील दे रहा हूँ कि कस्टमरी लॉज के ऐसी ट्राइब्स, हर ट्राइब के अपनी कस्टमरी प्रैक्टिस है, तो हर ट्राइब्स का अपना क्या होता है? कस्टमरी लॉ. सो because India is so diverse, religiously it is so diverse, therefore every religious group has its own customary laws. अब बात क्या चल रही है? अरे बात क्या चल रही है कि we have to replace these different customary laws by a uniform law. एक customary law से सारे different customary laws को replace करेंगे और इस concept को बोलते हैं uniform civil code. Is it okay or not? तो ये this is the story of uniform civil code. I will do uniform civil code in detail in the chapter of secularism also. But you got the feel? Customs का मतलब, what are customs? Practices that are being followed for a long period of time. Can a law be based on customs? Yes. Is it okay? This is what we are doing. अब देखिए next. What happens? क्या होता है जब two different cultures come in contact with each other? So give a heading, cultural contact. Cultural contact. So there are three possibilities when two cultures come in contact. The first possibility is assimilation. The second possibility is acculturation. इसको integration भी कहा जाता है, integration. And the third possibility is separation. Now assimilation में देखिए क्या हो रहा है. C1 coming in contact with C2. C1 I have written in bigger circle, C2 is in smaller circle. Can you find it? Now C1 in bigger circle का मतलब है कि majority of the population किस कौन से कल्चर को बिलोंग करती है? C1. और एक small group of population कौन से कल्चर को बिलोंग करता है? C2. Now in assimilation what happens is C2 completely merges with C1. तो C2 will lose its culture, अपना कल्चर बिल्कुल छोड़ देंगे और किसके साथ मर्ज हो जाएंगे? C1 के साथ मर्ज, मतलब they will lose their culture and adopt the culture of C1. तो लिखो C2 loses its culture and adopts the culture of C1. इसको ऐसे भी लिखते हैं C2 completely assimilates. किसमें assimilate हो गई? किसमें घुल गई? C1 में. Is it okay? Yes. पर कभी भी complete assimilation नहीं होता है, मतलब इन थ्योरी में तो ऐसे लिखते हैं बट कभी भी complete assimilation नहीं होता है. Are you getting or not? जैसे इस थ्योरी को बोलते हैं melting pot theory. This theory is also called melting pot theory. मतलब आपने सूप देखा है? सूप, बॉइलिंग सूप कैसा होता है? होमोजेनस. यस और नो? तो ये जो एसिमिलेटिव अप्रोच है ये कैसी सोसाइटी बनाती है? होमोजेनस सोसाइटी. अब सूप के अंदर आप कितनी, मेल्टिंग पॉट के अंदर आप कितने ही डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डाल लो, अल्टीमेटली वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होकर आपको एक होमोजेनस मिक्सचर देंगे. एग्रीड और नॉट? बट डू यू आल्सो एग्री टू द पॉइंट दैट if I put a different vegetable in the melting pot, will the different vegetable give a little bit of taste to the melting pot also or not? थोड़ा सा तो टेस्ट आएगा. टेस्ट का मतलब ये है that means little bit of culture of C1 will also impact C2, but very little. मतलब मैं in reality बता रहा हूँ ऐसा होता है. Acculturation में देखिए क्या है, same situation is there. C1 majority culture coming in contact with C2. Now in this case, now there is cultural exchange between C1 and C2.
cultural exchange between C1 C2. So C2 is adopting some elements of C1, C1 is adopting some elements of C2, and they are living in harmony with each other. They are living in harmony. तो cultural exchange भी कर रहे हैं, और इस अप्रोच को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. कौन सी कंट्री में? इंडिया. And acculturation theory is also called as salad bowl approach. Salad bowl, have you seen a salad bowl? You can see different vegetables of different colors. The bowl looks very, very colorful. So color is the diversity. They are together means they are living in harmony with each other. So this approach promotes diversity, while assimilative approach is promoting what? Homogeneity. While assimilative approach is promoting homogeneity. Next, third approach, separation. Separation में फिर से वही कहानी. C1 coming in contact with C2. इस अप्रोच में क्या होता है? लिखो, C1 rejects the culture of C2. C1 rejects the culture of C2, and C2 rejects the culture of C1. C2 rejects the culture of C1. एक दूसरे का कल्चर को क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट. थिंकिंग दैट, व्हाई दे आर रिजेक्टिंग? थिंकिंग दैट देयर कल्चर इज सुपीरियर टू द अदर कल्चर. देखो, थिंकिंग दैट देयर कल्चर इज सुपीरियर टू द अदर कल्चर. तो ये स्टोरी चल रही है. नाउ रिजेक्शन ऑफन रिजल्ट्स इन व्हाट? कॉन्फ्लिक्ट, जिसको आप एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जानते हैं. इट यूजुअली रिजल्ट्स इन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट. आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल रोहिंग्यास सुना है? रोहिंग्यास वर्सेस बुद्धिस्ट इन म्यांमार. रोहिंग्यास वर्सेस बुद्धिस्ट. फिर आपने देखा होगा श्रीलंका में तमिल वर्सेस सिंगलीज. यस, तो ये सब एग्जांपल किसके हैं? एथनिक कॉन्फ्लिक्ट. एक और इंडिया में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का एग्जांपल मिजोरम में हुआ था, मीजोस वर्सेस ब्रूस. मीजोस वर्सेस ब्रूस, BRU. लड़ रहे हैं आपस में, सब सोच रहे हैं कि हमारा कल्चर इज मोर सुपीरियर टू अदर कल्चर. सम अदर टाइप्स ऑफ सेपरेशन अप्रोच इज कम्युनलिज्म. हैव यू हर्ड अबाउट कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म, टू रिलीजियस ग्रुप फाइटिंग विद ईच अदर. और वो फाइट इसलिए कर रहे हैं, रिलीजियस ग्रुप, क्योंकि उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है. इज इट ओके और नॉट? कम्युनलिज्म. कई बार एक रिलीजियस ग्रुप के लोग ही आपस में लड़ते हैं. जैसे इस्लाम में देयर आर टू सेक्ट्स, शिया वर्सेस सुन्नीस. तो दिस इज, यू नो, यस, सेक्ट है इस्लाम की दोनों, बट बोथ आर फाइटिंग विद ईच अदर, क्योंकि दोनों की डिफरेंट रिलीजियस फिलॉसफी है. तो शिया सुन्नी. तो ये ऑल दीस अप्रोचेस कम अंडर व्हिच अप्रोच? सेपरेशन. अरे ओके और नॉट? सो दिस इज व्हाट इज assimilation. का एग्जांपल देखो, फ्रांस फ्रेंच सोसाइटी. दे प्रोपोगेट फ्रेंच कल्चर. दे वांट एवरीबॉडी टू अडॉप्ट व्हिच कल्चर? फ्रेंच. देन इस्लामिक कंट्रीज they also propagate Islamic culture. और किसका एग्जांपल चाहिए तुमको? इंटीग्रेशन, अकल्चरेशन का एग्जांपल तुम्हें नहीं पता? इंडिया. कॉस्मोपॉलिटन कंट्रीज जैसे न्यूयॉर्क इन USA इज एन एग्जांपल ऑफ अकल्चरेशन. ये कभी भी ये वाटर टाइट नहीं है. इज इट ओके? कंप्लीट कभी नहीं होता. नाउ नेक्स्ट यू राइट एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी. एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी. Yes, I will discuss positive assimilation. Give me some time, after half an hour. So, evolution of Indian society. Evolution of Indian society तीन phases में हुआ. There are three phases of evolution of Indian society. Phase 1 is Hindu value system, birth of Hindu value system. ये तीन phase आप history में भी पढ़ते हैं, ancient, medieval and modern. Is it okay? तो birth of Hindu value system. अभी हिंदू वैल्यू सिस्टम स्टार्ट किसने किया? हिंदू रिलीजन लेके कौन आया? आर्यंस. दे ब्रॉट ऋग वेदा, अपने साथ ऋग वेदा लेके आए. And in Rig Veda, they brought the theory of, इसकी theory, Varna system. And from Varna, they Varna से एक system emerge हुआ, which is that system, caste system. So phase 1 is giving birth to a system called caste. अब caste system में there are 4 main caste: Brahmin, Kshatriya, Vaishyas and Shudras. 4 main caste. अब जिसमें there are some lower caste and there are some upper caste. Now over a period of time, a fifth caste is also added. To the caste system, which is that caste, untouchables. So there are how many total caste? 5 caste: Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudras and untouchables. जिसमें से Shudras और untouchables कैसी हैं? Lower caste हैं. While Brahmin, Kshatriya and Vaishyas are which caste? Upper caste. तो ये upper caste lower caste का system evolve हुआ. तो मतलब इंडियन सोसाइटी अब किसकी तरफ बढ़ रही है? इनइक्वालिटीज की तरफ. इंडियन सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड्स इनइक्वालिटीज. जहां पे भी अपर लोअर का कॉन्सेप्ट आ जाए, मतलब वहां पे क्या है? ऊंच नीच का मतलब वहां पे क्या है? इनइक्वालिटीज आर देयर. नाउ not only there are inequalities, but the upper caste is putting restrictions on whom? Lower caste. Restrictions भी लगा रहे हैं. Is it okay? Now, in order to escape restrictions, there is rise of 2 distinct religion called Buddhism and Jainism. तो हिंदुइज्म तो अपने साथ एक वैल्यू सिस्टम लेके आया ही, साथ में अब 2 नए वैल्यू सिस्टम भी इवॉल्व हो रहे हैं. Which are these 2 वैल्यू सिस्टम? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. तो हिंदुइज्म के साथ 2 और कल्चर आ गए. मतलब इंडियन सोसाइटी अब कैसी हो गई? मल्टी कल्चरल हो गई, नहीं हो गई? मतलब देयर इज स्टार्ट ऑफ व्हाट? मल्टी कल्चरलिज्म.
तो lower caste people are converting into which religion? Buddhism and Jainism in order to escape what? Restrictions imposed by upper caste on lower caste. This is going on in the first phase. अब आते हैं second phase पे. Second phase पे Islamic value system is coming to India. Islam comes to India. Islamic phase is brought by Mohammed Ghori and Mohammed Ghazni. गौरी गजनी इस्लाम लेके आए इंडिया में. एंड इस्लाम इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदू सोसाइटी. अच्छा, मेजॉरिटी कल्चर किसका है? हिंदूस. अरे हिंदू वैल्यू सिस्टम इज गिविंग कल्चर C1. तो मेजॉरिटी कल्चर हमारे हिंदू वैल्यू सिस्टम का है. अब एक नया कल्चर C2. C2 इज विच कल्चर? इस्लामिक वैल्यू सिस्टम से डिराइव हुआ है. एंड C2 इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद C1. एंड C2 इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम C1. व्हाई वी से इट इज वेरी डिफरेंट? इस्लाम इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी. व्हाई डू वी से इस्लाम इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी? बिकॉज इस्लाम इज नॉट टॉकिंग अबाउट कास्ट सिस्टम. इस्लाम इज नॉट टॉकिंग अबाउट कास्ट सिस्टम. बट होगा क्या? सिंस इस्लाम इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, व्हाट विल हैपन इज, क्या होगा? Many people of lower caste will convert into which religion? Islam, in search for equality. In search for equality, they will start converting into the into which religion? Islam. अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है. अब धीरे धीरे C1 will start impacting C2. Hindu value system will start impacting Islamic value system, and conversions are also happening simultaneously. So because of these two effects, caste system is introduced in Islam also. वैसे all over the world, Islam doesn't have any caste. Caste system is present in Islam only in which country? India. So and that is the impact of which value system? Hindu value system. So caste system is introduced in Islam. And there are three main castes in Islam: Ashraf, Ajlaf, and Arzal. Ashraf, Ajlaf, and Arzal. तो तीन नई कास्ट आ गई. किसमें आ गई तीन नई कास्ट? इस्लाम में. अशरफ सबसे अपर कास्ट है. दे आर अपर कास्ट. ये नॉन कन्वर्ट्स हैं. ये नॉन कन्वर्ट्स, कहते हैं हम ओरिजिनल मुस्लिम ब्रीड है, हम कन्वर्टेड नहीं है, है ना. और ये अपने आगे सरनेम यूज करते हैं, खान, शेख, सईद, ये सब अशरफ. अजलफ कौन है? अजलफ मेनली शूद्राज हैं. और अरजाल कौन है? अनटचेबल्स. अरे देखो लोअर कास्ट, देखो हिंदू सोसाइटी में कौन सी लोअर कास्ट? शूद्राज एंड अनटचेबल्स. सो दे आर कन्वर्टिंग इनटू व्हिच रिलीजन? इस्लाम. इस्लाम में शूद्राज विल गेट द स्टेटस ऑफ हुम? अजलफ. अनटचेबल्स विल गेट द स्टेटस ऑफ अरजाल. इज इट ओके? अजलफ मेनली क्या काम करते हैं? आर्टिसियंस का काम करते हैं. आर्टिसियन, बाल काटते हैं, नाई या सिलाई बुनाई कढ़ाई करते हैं. दर्जी सुना है? दर्जी इज अ कास्ट. यस. देन अरजल ये मीनियल जॉब करते हैं. मीनियल जॉब जैसे साफ सफाई का काम, स्वीपिंग या फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग, इससे रिलेटेड काम करते हैं अरजाल. और हिंदू का सिस्टम में भी ये सेम काम करते हैं. हु आर आर्टिसियंस इन हिंदू का सिस्टम? शूद्रास. एंड हु आर डूइंग मीनियल वर्क? हु आर डूइंग मीनियल वर्क? अनटचेबल्स. क्लियर और नॉट? तो ये है. देखो दिस फेज इज आल्सो नोन एज, द सेकंड फेज इज आल्सो नोन एज इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी. So will Islam bring new architecture or not? Yes. क्योंकि वैल्यूज अलग हैं. वैल्यूज कैसे अलग हैं? देखिए, हिंदुइज्म बिलीव्स इन इंडिविजुअल वर्शिप, इस्लाम बिलीव्स इन कलेक्टिव वर्शिप. अब जब कलेक्टिव वर्शिप है, मतलब बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करना है, तो आर्किटेक्चर में क्या आता है? डोम. मंदिर जो हिंदुइज्म है वो इंडिविजुअल वर्शिप पे बेस्ड है, तो मंदिर का जो गोपुरम होता है वो कैसा होता है? स्मॉल इन साइज. इंडिविजुअल वर्शिप, लोग साथ में पूजा नहीं करेंगे, चांस बाय चांस आके पूजा करेंगे और चले जाएंगे. तो आर्किटेक्चर ऑफ टेंपल विल बी वेरी स्लीक एज कंपेयर टू आर्किटेक्चर ऑफ हुम? इस्लाम. तो इस्लाम के आर्किटेक्चर ने डेप्थ, ब्रेथ और लेंथ दिया. कौन से आर्किटेक्चर को? हिंदू आर्किटेक्चर को. क्लियर और नॉट? ये स्टोरी. नेक्स्ट आइए थर्ड. अब नया वैल्यू सिस्टम आ रहा है, मॉडर्न वैल्यू सिस्टम. एडवेंट ऑफ मॉडर्निटी. मॉडर्निटी का मतलब क्या है? देखो, मॉडर्निटी, यस, व्हाट इज मॉडर्न? हाउ यू बिकम मॉडर्न? हाँ, ठीक है. और अरे कुछ नहीं, इतना कहानी क्या. मॉडर्निटी मीन्स व्हेन योर थिंकिंग इज ड्रिवन बाय साइंस. इज इट ओके? मॉडर्निटी का ऑपोजिट होता है क्या? ट्रेडिशन. मॉडर्निटी का ऑपोजिट ट्रेडिशन. और ट्रेडिशन इज ड्रिवन बाय व्हाट? ट्रेडिशन इज ड्रिवन बाय व्हाट? रिलीजन. देखो पहले दो फेज में क्या चीज डोमिनेंट है? रिलीजन इज डोमिनेंट इन दीस टू फेजेस. अब रिलीजन के साथ इंडियन सोसाइटी में क्या इंट्रोड्यूस हुआ? साइंस. कौन लेके आया? ब्रिटिशर्स विल ब्रिंग साइंस. बट हैज साइंस कंप्लीटली रिप्लेस्ड रिलीजन इन इंडिया? नो. रिलीजन एंड साइंस आर को एग्जिस्टिंग विद ईच अदर. इज इट ओके? अब देखिए, साइंस अपने साथ क्या लाती है? लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक एंड रैशनैलिटी. So you know, science also brings technology. Science अपने साथ टेक्नोलॉजी लाती है and new social institutions. Science brings technology and new social institutions. So science is introduced in India from outside or it has come from within? Outside. Who are bringing science to India? British. अब यूरोप में मुझे बताओ, यूरोप में science has emerged from within or it has come from outside? Within. यूरोप में तो यूरोप में खुद से आई है. Is it okay? यूरोप में modernity is yes. Now dark age से आपने सुना होगा, यूरोप डार्क एज से निकल के किसमें आया? Yes, new age, Renaissance. सुना है? Renaissance is rebirth of Europe from dark age. Dark age was driven by church, religion. Is it okay? New age, Renaissance is driven by what? Science. So Newton is coming into picture. Newton is saying that apple is falling on my head not because Jesus has gifted the apple.
एप्पल इज फॉलिंग ऑन माई हेड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इज इट ओके और नॉट? तो रेनिसा से कौन सा रेवोल्यूशन आया सबसे पहले? रेनिसा से, हाँ, एनलाइटमेंट। रेनिसा इज एनलाइटमेंट ओनली। रेनिसा इज एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब समझ में आया? बल्ब जल गया। एनलाइटमेंट बल्ब जल गया मतलब पीपल आर नाउ ड्रिवन बाय व्हाट? साइंस। साइंस। नाउ एनलाइटमेंट विल ब्रिंग साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन का मतलब लोग नई साइंटिफिक लॉज डिस्कवर कर रहे हैं, जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, सॉरी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ फोर्स। क्या था, किसने दिया था? ए यार तुम लोग क्या हो यार, एच सी वर्मा। यस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑफ फोर्स, फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स। तो ये सारे लॉज, एच सी वर्मा के जितने लॉज हैं, ये सारे कौन से रेवोल्यूशन में आए? साइंटिफिक रेवोल्यूशन। मैप्स, डिस्कवरीज, ये सब कब हो रही हैं, कौन से पीरियड में हो रही हैं? साइंटिफिक रेवोल्यूशन के टाइम हो रही हैं। इज इट ओके? नाउ साइंटिफिक रेवोल्यूशन विल गिव बर्थ टू व्हाट? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। टेक्नोलॉजी आएगी। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ आया? ब्रिटेन। यूरोप में तो आया ही। ब्रिटेन। वर्ल्ड हिस्ट्री, हैव यू हर्ड अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री? यहीं से सारी कहानी शुरू होती है यूरोप की। यूरोप आपस में लड़ रहे हैं, countries are fighting with each other, and the root cause of all these problems is what? All this problem is what? Industrial revolution. Are clear? Industrial revolution में क्या बनना शुरू हुआ? Machines. Machines. Now machines are hungry. Machines are very hungry. They can work day and night. Yes or no? Humans cannot work day and night, but machines can work day and night. That means for machines to work day and night, they have to receive what? Raw material. अब raw material चाहिए unlimited. Raw material unlimited कब मिल सकता है आपको? When you are acquiring, yes, natural resources from other countries. So there starts a process called, yes, colonialism, imperialism. अरे okay or not? और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही एक और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आया। कौन सा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन। सुना है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है। जितनी भी वॉर्स हुई, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वो सब किसकी वजह से हुई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। अरे ओके और नॉट? कॉलोनीज के लिए फाइट कर रहे हैं लोग। कॉलोनीज के लिए फाइट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। फॉर व्हाट? मशीन्स। मशीन्स। अरे इससे पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले सोसाइटी में एक ही इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वो हो रहा है क्या? एग्रीकल्चर। नाउ एग्रीकल्चर इज रिप्लेस्ड बाय फैक्ट्रीज। जब फैक्ट्री सिस्टम आ गया तो हमारे वो यूरोप में क्या आ गया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सोशल इंस्टीट्यूशंस। न्यू सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक, देखो अच्छा क्या क्या नई टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आई? रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, ये सब चीज़ें। न्यू सोशल इंस्टीट्यूशन मीन्स न्यू मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन, मशीन कैसे बनानी है, साइंटिफिक लॉज क्या है, मशीन को और एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, ये सारा आपको कहाँ पढ़ाया जा रहा है? एजुकेशन सिस्टम में। देन देयर इज बर्थ ऑफ सिविल सर्विसेज, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। बर्थ ऑफ सिविल सर्विसेज। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। जमींदारी सिस्टम, सुना है? जमींदारी सिस्टम। इज इट ओके और नॉट? तो ये सारी स्टोरी स्टार्ट होती है विद ब्रिटिश कमिंग टू इंडिया। 1857 आप लिख सकते हैं यहाँ पे। मॉडर्न वैल्यू सिस्टम आया इंडिया में। तो लिखो दिस फेज इज आल्सो नोन एज, अच्छा एक और सोशल इंस्टीट्यूशन, लॉ। लॉ। हाँ, अरे 1757 लिख लो यार, इन सब चीज़ों से क्या फर्क पड़ रहा है? बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, ये सब तुम थीम समझो। थीम क्या है? अंडरस्टैंड द स्पिरिट। मैं अपनी नॉलेज थोड़ी ना यहाँ तुम्हें टेस्ट करवा रहा हूँ यार, आपको थीम समझनी है। व्हाट इज द थीम ऑफ? थीम इज दैट यूरोपियंस आर कमिंग टू इंडिया, यूरोपियंस आर ब्रिंगिंग व्हाट? साइंस, मॉडर्न वैल्यूज। क्रिश्चियन मिशनरीज विल आल्सो कम टू इंडिया। तो एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस होगा इंडिया में, क्रिश्चियनिटी। तो लिखो दिस फेज, द थर्ड फेज इज आल्सो नोन एज, द थर्ड फेज इज आल्सो नोन एज, बेसिकली 1857 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके बाद मॉडर्निटी ने अपने आप को इंटेंसिफाई किया। इज इट ओके और नॉट? इसके बाद क्वीन पूरा कंट्रोल ले चुकी है इंडिया पे, तो अब वो पूरी तरीके से इंडिया को मॉडर्नाइज करना चाहती है। मॉडर्नाइज इसलिए करना चाहती है जैसे जमींदारी सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जमींदारी सिस्टम? कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। कैपिटलिज्म मींस रॉ मटेरियल, जितना ज्यादा रॉ मटेरियल मिल सके उतना ज्यादा रॉ मटेरियल हमारी किसको चाहिए? फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को चाहिए। इसीलिए कैपिटलिज्म में भी पूरी तरीके से क्या लाया गया? रिफॉर्म्स लाए गए। तो काम बस पर्पस यही है कि हमारी फैक्ट्रियां रुके ना, हमारी फैक्ट्रियों को रॉ मटेरियल का सप्लाई कॉन्स्टेंटली होता रहे। इज इट ओके? अब विल कॉलोनियलिज्म आल्सो प्रोवाइड मार्केट फॉर दीस प्रोडक्ट्स? यस और नो? मार्केट्स भी मिलेगा, तो ये दोनों फायदे हो रहे हैं। तो नेक्स्ट नाउ देखो दिस फेज इज आल्सो नोन एज वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो इंडिया यूनिक इसलिए है बिकॉज इंडिया में ट्रेडिशन भी साथ चल रही है, साथ में मॉडर्निटी इज आल्सो गोइंग। सो हिंदूज, हिंदू वैल्यू सिस्टम इज गिविंग कल्चर C1, इस्लामिक वैल्यू सिस्टम इज गिविंग कल्चर C2 एंड मॉडर्न वैल्यू सिस्टम विल गिव कल्चर C3। क्योंकि डेमोक्रेसी आ गई तो नया आर्किटेक्चर आएगा। क्या नया आर्किटेक्चर आया? पार्लियामेंट बिल्डिंग आ गई, जिसको तोड़ रहे हैं अब, पार्लियामेंट बिल्डिंग आ गई। इज इट ओके और नॉट? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बने, तो ये सारे चेंजेस लाए गए। तो इंडियन कल्चर आई सी, बट क्या C3 ने कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया C1 C2 को? तो इंडियन कल्चर इज अ मिक्स ऑफ C1 प्लस C2 प्लस C3, मिक्स ऑफ C1 C2 एंड C3। C1 and C2 are driven by what? Religion. And therefore which kind of societies? Traditional society. C3 is driven by what? Science. तो C3 कैसी है? Modern. आजकल C4 भी आ गया है, आजकल C4 भी आया है। That is the impact of globalization on Indian society. Is it okay? So बाद में देखेंगे, पर अभी आपको ये समझ में आया? C1. Now you write, give a heading, salient features of Indian society. Wait, salient features of Indian society. First point, Indian society को please write IS. Indian society is very rich and diverse. Is very rich and diverse because it evolved in 3 phases.
because it evolved in three phases, giving it three unique cultures, ब्रैकेट में C1 plus C2 plus C3, ठीक है, तीन यूनिक कल्चर दिए, लिखो पॉइंट नंबर 2, all three cultures coexisted with each other, all three cultures coexisted with each other, coexisted, underline this word, because Indian culture is very tolerant in nature, Indian culture is very tolerant in nature, is it okay, underline the word tolerant. Next you write third point. अब देखिए कोएग्जिस्टेंस के पीछे एक और रीजन क्या है, एंड व्हाट इज सो यूनिक अबाउट आवर इंडियन कल्चर, लिखो फर्स्ट, लिखो पॉइंट नंबर 3, इंडियन कल्चर आई सी maintained its continuity from the past, its continuity from the past till the present times, its continuity from the past till the present times. तो इसका मतलब है what evolved in the past. For example, caste system evolved in the past. Has it continued till the present times or not? Yes. So what systems evolved in the past continue till the present times, which is unlike, लिखो, which is unlike other civilizations, unlike other civilizations. जैसे ब्रैकेट में ग्रीक मेसोपोटामियन, ग्रीक सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, ब्रैकेट क्लोज, ग्रीक रोमन और मेसोपोटामियन लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज. सो विच इज अनलाइक अदर सिविलाइजेशंस व्हिच हैव लॉस्ट कंटिन्यूटी, व्हिच ब्रैकेट क्लोज के बाद, व्हिच हैव लॉस्ट कंटिन्यूटी फ्रॉम द पास्ट, कंटिन्यूटी फ्रॉम पास्ट टिल द प्रेजेंट टाइम्स. अरे ओके और नॉट. अब हमें देखना है कि इंडिया ने कंटिन्यूटी क्यों मेंटेन करी, व्हाई, सो अंडरलाइन द वर्ड कंटिन्यूटी. हैव यू अंडरलाइंड इट? यस, दिस इज द कीवर्ड कंटिन्यूटी. तो दो तीन कीवर्ड हैं, आपने अंडरलाइन करें तो, नहीं करें तो करिए. डाइवर्स एंड रिच, दूसरा है कंटिन्यूटी, और थर्ड इज टॉलरेंट, कोएग्जिस्ट एंड टॉलरेंट. नेक्स्ट, द रीजन फॉर कंटिन्यूटी इज इंडियन कल्चर इज assimilative, adaptive, and tolerant in nature. Assimilative, adaptive and tolerant. Are you getting this much? अब assimilative का एग्जांपल देखिए, कैसे हमने आउटसाइडर्स को एसिमुलेट किया हमारे कल्चर में. तो लिखो इन एंशिएंट इंडिया, इन एंशिएंट पास्ट, एनीथिंग यू कैन राइट. एसिमुलेटिव का एग्जांपल लिख रहे हैं, इन एंशिएंट पास्ट Chinese tribe attacked India, and settled in India as Kshatriyas. क्योंकि वॉरियर थे, इसीलिए इंडिया में इनको क्या स्टेटस मिला, क्षत्रियास, फेमसली नोन एज कुशान्स. सुना है कुशान्स? तो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ अटैक फ्रॉम आउटसाइड. हमने सबको क्या किया है, एसिमुलेट करने की कोशिश की है. इज इट फाइन एवरीवन? अडैप्टिव, हमने अडैप्ट, फॉर एग्जांपल अडैप्टिव या फिर अकल्चरेशन भी लिख सकते हैं. अकल्चरेशन में क्या होता है, अकल्चरेशन में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के कल्चर को एक्सचेंज करते हैं. तो व्हेन ग्रीक्स सेटल इन इंडिया एज इंडो-ग्रीक्स, बर्थ ऑफ व्हिच न्यू आर्ट फॉर्म, गांधार आर्ट फॉर्म. सुना है गांधार आर्ट फॉर्म? थोड़ा बुद्धा का, थोड़ा हिंदूज का, थोड़ा सा ग्रीक फीचर्स लगा के हमने एक नया आर्ट फॉर्म डेवलप किया, नोन एज गांधार आर्ट फॉर्म. टॉलरेंट कैसे हैं, टॉलरेंट कैसे, इस्लाम वाज अलाउड टू फ्लरिश along with Hinduism. Islam was allowed to flourish along with Hinduism. Okay, all of you. Then you write now fourth point. India में after the modern value system, कौन लाया modern value system? British. So after the advent of British, India में there is coexistence of class and caste. There is coexistence of class and caste. Have you heard about class? Yes, class. How many classes are there? There are three classes are there. Upper class, middle class and lower class. कहते हैं ना class. So what is the criteria of forming class? Economic criteria for creating class. अब देखिए class allows change, agreed or not? If I am from lower class and I work hard, can I enter into upper class or not? Yes. So class allows, एक word use करते हैं mobility. मैं अभी जिस क्लास में हूं, मैं अपनी क्लास चेंज कर सकता हूं. If there is option for change, that means there is option for mobility. Clear or not? Caste क्या है? Caste is fixed. And how my caste is decided? By birth. My caste is decided by birth. So which out of the two is modern and which is tradition? Caste is tradition and modernity is class. So modern societies में क्या मिलेंगी आपको? Class. Traditional society में आपको क्या मिलेगी? Caste. But India में both caste and class are coexisting. Clear or not? ऐसा कहते हैं जैसे class is mainly a feature of Western societies.
या फिर अर्बन एरियाज में आपको मेनली क्या मिलेगी? क्लास। रूरल एरियाज, रूरल और फ्यूडल एरियाज में आपको क्या मिलेगी? कास्ट। रूरल एंड फ्यूडल एरियाज यू विल फाइंड कास्ट। अब एक बड़ा क्वेश्चन बस इंडिया के लिए यही है, हैज कास्ट बीइंग रिप्लेस्ड बाय क्लास? इज इट ट्रू? नो, बोथ आर को एग्जिस्टिंग विद ईच अदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, इंडिया इज लार्जली पैट्रियार्कल। इंडिया इज लार्जली पैट्रियार्कल with some pockets of, किसके pockets हैं? Matriarchy, with some pockets of matriarchy. Now, have you heard of these terms? Archy means dominance, patriarchy means dominance of male, ठीक है ना? Matriarchy means dominance of whom? Females. तो देखो patriarchy versus matriarchy, अब इनमें दो कॉन्सेप्ट और होते हैं। वन इज पैट्रीलोकल, यस, एंड पैट्रीलिनियल। पैट्रीलोकल, पैट्रीलिनियल, ऐसे ही मैट्रीलोकल एंड मैट्रीलिनियल, लोकल लिनियल। अब लोकल का मतलब है, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल? रेजिडेंस। कौन किसके रेजिडेंस में जा रहा है पोस्ट मैरिज? सो मैट्रियार्कल सोसाइटीज में क्या होता है? ग्रूम गोज टू द हाउस ऑफ द ब्राइड, दूल्हे की विदाई होती है। इसमें मैट्री लोकल सोसाइटीज में, मैट्री लोकल, पोस्ट मैरिज रेजिडेंस इज ऑफ द ब्राइड। लीनियल मींस lineage is traced from mother side. Patrilineal में lineage is traced from father side. So the common ancestor in patrilineal societies will be male member. Common ancestor in matrilineal societies will be female. Are you understanding or not? पैट्रीलिनियल सोसाइटीज में प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड टू द एल्डेस्ट मेल। प्रॉपर्टी पे फर्स्ट राइट किसका होता है? एल्डेस्ट मेल। मैट्रीलिनियल में प्रॉपर्टी पे फर्स्ट राइट किसका होता है? यंगेस्ट डॉटर। यंगेस्ट डॉटर लिख लो, सीधा फीमेल लिखने की जरूरत। इज इट ओके और नॉट? जस्ट ऑपोजिट। अब इंडिया लार्जली कैसी सोसाइटी है? पैट्रियार्कल, बट देयर आर सम पॉकेट्स। कैसे हैं सम पॉकेट्स? सी हियर, बस दो ही जगह है। वन इज मेघालय, मेघालय की दो ट्राइब्स हैं, गारोज एंड खासीस, गारो खासीस। एंड इन केरला यू हैव नायर्स ऑफ केरला, नायर्स, ठीक है? सिक्स्थ पॉइंट। सो बिफोर स्टार्टिंग सिक्स्थ पॉइंट, यू टेक अ ब्रेक एंड वी 2 minutes break, then come back. Any doubts are there? Doubts? Yes, you were asking. वो भी साइंस है, पर साइंस उतनी डेवलप नहीं हो पा रही उस टाइम जितनी तेजी से डेवलप हुई विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश। वो भी साइंस ला रहे हैं, बट एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं लाए। रेवोल्यूशन यूरोप में आया, साइंस आई। मैट्रीलिनियल, दोनों मैट्री, पूरे इंडिया में पैट्रीआर्कल, पैट्रीलिनियल, पैट्रीलोकल, इन दो जगहों पे बस मैट्रीलिनियल एंड मैट्रीलोकल सोसाइटीज हैं। Any other doubt? Please don't read any book for social issues. No books are required for social issues. Only class notes are more than enough. And read newspaper. Newspaper is essential for my class. आप जितना ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उतना ही आपको क्लैरिटी आएगी इश्यूज की। For example, 2-3 days before, there was a news about tokenism. Tokenism. Did you read about tokenism? हिंदू में आया था। अरे ब्रो, ग्रे टी शर्ट, क्या हो गया ब्रो? ऐसा क्या डिस्कशन हो रहा है? बताओ, व्हाट इज टोकनिज्म? सुन ले यार 2 मिनट, मैं बोल रहा हूँ, कुछ पैसे दिए तुमने। न्यूज़पेपर प्लीज रीड, एटलीस्ट इफ यू डोंट गेट टाइम टू रीड एंटायर न्यूज़पेपर, प्लीज रीड द हेडलाइंस, एटलीस्ट हेडलाइंस एवरी डे। द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू डू इज हेडलाइंस, ठीक है? फिर आपको लगता है कुछ चीज़ अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नहीं लगेगा। जब सब हेडलाइंस पढ़ोगे पहले, फिर आपको फील आ जाएगी कि क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत। फिर आप उसमें खुद से रिसर्च भी कर सकते हैं और खुद से पढ़ भी सकते हैं उस आर्टिकल को, ठीक है? जैसे टोकनिज्म के बारे में आता रहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आता रहता है, व्हाट सोशल इशूज आर बीइंग क्रिएटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर बुलिंग और वो सब। तो ये सब आप आजकल जैसे पिंक टूरिज्म के बारे में बात चल रही है। हैव यू हर्ड अबाउट पिंक टूरिज्म? क्या है पिंक टूरिज्म? अरे ऐसा क्या तुम्हारे फोन में आ रहा है? थोड़ा मेरे अंदर प्रॉब्लम है इग्नोर कम करने की। वैसे चिल है यार, कोई इशू नहीं है, पर एटलीस्ट जब मैं बोल रहा हूँ तब तो सुन लो। ऐसा क्या तुम्हारा काम चल रहा है इंपॉर्टेंट, अर्जेंट? कुछ नहीं होगा मोबाइल से। जो लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं या मोबाइल में कुछ भी देख रहे हैं, उनका कुछ नहीं होगा, कोई कुछ है ही नहीं मोबाइल में। मोबाइल में आप सिर्फ एक चीज़, जब आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, उसको सर्च करने के लिए आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा टेलीग्राम, ये चैनल, वो, ये अवध हो जा, वो हो जा, ये हो जा, कुछ नहीं। सब बेकार की बातें हैं, ये फालतू टाइम पास कर रहे हैं लोग। आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ, इज इट ओके? दैट इज द ओनली मैकेनिज्म, ओनली वे आउट। चलो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। प्रिपरेशन इज वेरी सिंपल। दिस एग्जाम इज ऑल्सो, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा भी पढ़ रहे हैं, ध्यान से चीज़ें समझ रहे हैं, तो सर्विसेज में सिलेक्शन होना हो, आप कुछ अच्छा जरूर करोगे, दैट इज फॉर श्योर। तो बस प्रोवाइडेड यू डू हार्ड वर्क फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years, स्पेशली द फर्स्ट ईयर, द फाउंडेशन ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन। और इसमें भी क्लासेस में जो आप सीखोगे वो आप कभी कहीं और नहीं सीख सकते। आपको याद भी वही रहेगा जो आपने मैक्सिमम क्लासेस में ध्यान से सुना है।
इज इट ओके? तो क्लासरूम टीचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग, तो प्लीज बी अटेंटिव एटलीस्ट फॉर द क्लास। उसके बाद एक बार आपने सुन लिया अच्छे से तो आपके दिमाग में फिट हो गया है, अब आप उसके बाद आराम से रिलैक्स कर सकते हैं या जो करना चाहें कर सकते हैं, बट एक बार ध्यान से अटेंटिवली क्लास को सुनिए ताकि आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाए, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट। क्लियर? और कम पढ़ना है, कम। अरे तुम्हें क्या टीवी हो गई क्या? यू कैन टेक रेस्ट, गो होम। यू वांट टू टेक रेस्ट? हाँ हाँ, मेरा भी चौक है। हाँ, क्या हो गया? चलो आया, चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। आई वाज ऑन पॉइंट नंबर 6 लिखिए, 6 में क्या लिखोगे? इंडिया हैज यूनिक मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। ये हमारा इंडिया का यूनिक मॉडल है सेक्युलरिज्म का। एंड व्हाट इज द यूनिक मॉडल? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब इस पे मेरी पूरा एक लेक्चर ही होता है, व्हाट इज यूनिक मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। सो व्हेन आई विल डू सेक्युलरिज्म आई विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन मॉडल, और इंडियन मॉडल में ऐसा क्या यूनिक है। ये यूनिकनेस हमें दी है आर्टिकल 25 ने। इन डिटेल आई विल डू आर्टिकल 25 विद यू। कुछ पॉलिटी के आर्टिकल्स आई विल डू, जैसे 15 ऑफ 4 रिजर्वेशन, 16 ऑफ 4 रिजर्वेशन, 17, देन आर्टिकल 25। चलो नेक्स्ट आइए, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी 6th पॉइंट 7th। इंडिया हैज डाइवर्स किनशिप पैटर्न्स। किनशिप पैटर्न्स। अब किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी। किन मींस रिलेटिव, किनशिप मींस रिलेशनशिप। सो किनशिप पैटर्न्स आर डिफरेंट एंड किनशिप पैटर्न्स आर फॉर्म्ड ऑन 2 बेसिस। क्या हैं 2 बेसिस? यस, ईदर यू आर कनेक्टेड टू योर रिलेटिव बाय ब्लड रिलेशनशिप्स, और थ्रू मैरिज, या फिर थ्रू मैरिज। अब किनशिप पैटर्न का मतलब है रूल्स टू बी फॉलोड। याद है, सोसाइटी क्रिएट्स व्हाट? रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो क्या रूल रेगुलेशन सोसाइटी ने बनाए हैं विद रिस्पेक्ट टू योर ब्लड रिलेटिव्स एंड विद रिस्पेक्ट टू योर रिलेटिव्स बाय मैरिज? इज इट ओके? नाउ अब देयर आर डाइवर्स किनशिप पैटर्न मींस नॉर्थ इंडिया का किनशिप पैटर्न अलग है, मतलब रूल रेगुलेशंस नॉर्थ इंडिया के अलग हैं, साउथ इंडिया से, ऐसी वेस्टर्न इंडिया के अलग हैं, ईस्ट इंडिया से, और सेंट्रल इंडिया के भी अलग हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री से। सो हाउ मेनी किनशिप पैटर्न्स आर देयर? 5। सो देयर आर 5 यूनिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें से बहुत फेमस है व्हाट इज द डिफरेंस इन किनशिप पैटर्न ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। तो थोड़ा सा अपन इसको लिख लेते हैं, नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन किनशिप पैटर्न्स। अब जैसे मैरिज रूल्स की मैं अगर बात करूं, मैरिज रूल्स, तो मैरिज रूल इन नॉर्थ इंडिया सेज दैट देयर शुड बी गोत्र exogamy. गोत्र एक्सोगैमी समझते हो? You have to marry outside your गोत्र. You can't marry even your distant brother and sister. कौन सा सिस्टम? अरे कौन सा सिस्टम? नॉर्थ इंडियन किनशिप सिस्टम। साउथ इंडिया में मैरिज इज अलाउड बिटवीन क्रॉस कजन्स। क्रॉस कजन मैरिज इज अलाउड। दूसरा, नॉर्थ इंडिया में द पर्पस ऑफ मैरिज इज टू एक्सटेंड द किनशिप नेटवर्क। रिश्तेदारी बढ़ाने का काम, मतलब और नए कॉन्टैक्ट्स बनाना मैरिज के थ्रू, एक्सटेंड किनशिप नेटवर्क। साउथ इंडिया में क्या होता है? यस, द पर्पस इज टू स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग नेटवर्क, टू स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। तो मतलब नॉर्थ इंडिया में रिश्ता जितनी दूर से आए उतना अच्छा। तो दिल्ली की पार्टी चाहेगी हम जयपुर से रिश्ता लेके आए, डिस्टेंस शुड बी एज फार एज पॉसिबल while going for matrimonial alliance। साउथ इंडिया में डिस्टेंस शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल, मतलब बिल्कुल कम डिस्टेंस पे होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, पोस्ट मैरिज गर्ल is member of the new house. That means she has to first prioritize the roles and responsibilities of the groom's house. Are you clear or not? It is believed that she is no longer after marriage, she is no longer the part of her father's house. Now she is part of husband's house. Are you clear or not? While in South India, the girl is an equal participant in father's house as well as in husband's house. दोनों में equal participation रहेगा गर्ल का। So 12 hours की ड्यूटी अपने घर पे, 12 hours की ड्यूटी अपने हस्बैंड पे। तो कई बार ऐसे भी होता है that when husband is going to the office, he will take his wife with him, drop her to her father's house, and while coming back pick her up and take her to his house. That is why the location of the house is a very important factor while going for what? Matrimonial alliances. In which system? South Indian kinship system. North India kinship system में kinship terminology is very extended. और respect की अगर बात की जाए, respect में the respect post marriage किसकी ज्यादा होगी? Groom's family will enjoy more respect as compared to whose family? Bride's family. South India में ऐसा नहीं है। South Indian kinship system, there is equality of status, चाहे ग्रूम की फैमिली हो चाहे ब्राइड की फैमिली हो, एंड रिस्पेक्ट इज कमांडेड अकॉर्डिंग टू एज। जैसे जो दूल्हा होता है या फिर क्या बोलते हैं, द सन इन लॉ इज गिवन द हाईएस्ट रिस्पेक्ट व्हेन ही गोज टू द फैमिली ऑफ गर्ल्स हाउस। हैव यू सीन? यू माइट हैव सीन, एवरीबडी हैज सीन। सो दे आर गिवन हाई रिस्पेक्ट। इज इट क्लियर? नाउ everybody will be at the service of their son-in-law. In which kinship system? North Indian kinship system. South India में क्या होगा? The respect will be given according to age. So the son-in-law is of lower age as compared to father of course होगा ही, unless and until Bollywood matrimonial alliance हो रहे हो, so that is different, but he has to give more. Is it okay? Son-in-law has to give more respect to the father of the girl. ठीक है? ऐसे। और kinship system यहाँ पे extended नहीं है, जो कि North India में बहुत extended है। कैसे extended है? The mother's father will be called Nana, the father's father will be called Dada. To differentiate between मदर साइड फैमिली एंड फादर साइड फैमिली, और उसमें भी
elder and younger. For example, the younger brother of father will be called as chacha and elder brother of father tau. और वहीं पे साउथ इंडिया में चाहे चाचा हो चाहे ताऊ हो चाहे मामा हो, all are uncles. Is it okay? So no different terminologies in case of which system? South Indian kinship system, but there are different terminologies in case of North Indian kinship system, which shows our diversity. Clear? चलिए. So this is all about your अच्छा एक चीज और seventh eighth point eighth. Yes, tribes exist in India. Tribal diversity is very high. There are around 74 different tribal groups. Tribal groups. 744 different tribal groups का मतलब है there are 744 unique cultural elements. There are 744 unique cultures. Okay or not? Yes, features हैं. Now you give a heading caste system in India. Give a heading caste system in India. हाँ, what is the source of caste system? There is caste system कहाँ से आया है? Caste system कहाँ से आया है? वर्ना थ्योरी से आया है. वर्ना. Is it okay? तो लिखो first make a column and write difference between varna and caste. Difference between varna and caste. तो वर्ना क्या है? वर्ना is just a theoretical model. Varna is just a theoretical model. Theoretical model मतलब varna exists only in theory. Varna exists only in theory. So it is a theoretical model of division of labor. Theoretical model of division of labor, which talks about four ones. Four ones. Brahmin, Kshatriya, Vaishyas and Shudras. इन चार वन की बात करता है वर्ना सिस्टम. And where is varna system mentioned? Rig Veda, the last chapter, the 10th chapter of Rig Veda. Caste. Caste is a field study. Caste is field study. This is ground reality. So what is practiced is caste. What is there in theory is varna system. Are you getting or not? And from four ones, we get four main caste. We get four main caste. Again, the caste name is same: Brahmin, Kshatriya, Vaishyas, and Shudras. Next, varna has no restrictions. Varna system has no restrictions. Varna has no restriction का मतलब है कि varna system में कोई भी restrictions नहीं है. जैसे caste says that you can't change your occupation, you can't change your caste. No such restrictions are present in which system? Varna. So if I am born in a Brahmin family but I am a good warrior, I can become what? Kshatriya. Is it okay? So no caste system means varna allows mobility. Varna allows mobility. While caste has restrictions. Caste पे बहुत ज़्यादा restrictions हैं. And caste does not allow mobility. ये अलाउड नहीं है इसमें कास्ट में. बट कई बार बहुत फील्ड स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि कास्ट में भी मोबिलिटी है पॉसिबल. वेरी रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर. कास्ट ऑल्सो अलाउज मोबिलिटी थ्रू अ प्रोसेस. डोंट राइट, जस्ट लिसन. थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड संस्कृताइजेशन. सुना है? थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड संस्कृताइजेशन. तो अभी आप लिखेंगे नहीं, बस मैंने आपको फील दिया. यस. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट. Varna doesn't talk about untouchability. There is no concept of untouchability in which system? Varna system. तो आप देखेंगे सिर्फ चार वर्ड्स हैं. However, caste has untouchability, which is the fifth caste of untouchables. Fifth caste of untouchables. I will discuss. But first you write, it has fifth caste, untouchables. Next, Varna theory, fourth point. Varna theory is same across India. Varna theory is same across India. मतलब आप जहाँ पे भी जाएंगे, Varna theory will be same. Four ones, Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudras. While caste has regional variations. Caste has regional variations. रीजनल वेरिएशन का मतलब है कास्ट इन वन रीजन इज नॉट सेम एज कास्ट इन अनदर रीजन. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेलिंग यू, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कास्ट सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है. जैसे नॉर्थ इंडिया में आपको पांचों कास्ट मिलेंगी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास एंड अनटचेबल्स. साउथ इंडिया में आपको सिर्फ तीन कास्ट मिलेंगी: ब्राह्मण, शूद्रास which are also called as non-brahmins, and untouchables. Which caste is not present? Kshatriyas and Vaishyas are not present in southern states. Is it clear or not? So caste system has what? Regional variations. Caste in one region is not same as caste in another region. But Varna theory is same across India. Fine, all of you got it clear this much? अब देखिए वर्ना से कास्ट इवॉल्व कैसे हुआ. सो लुक एट एंशिएंट हिस्ट्री. लुक एट एंशिएंट हिस्ट्री. एंशिएंट हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू फेजेस. सो देयर इज अर्ली वैदिक पीरियड. हैव यू हर्ड अबाउट द फेजेस? लेटर वैदिक पीरियड, देन मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, देन गुप्तास, देन पोस्ट गुप्तास. तो वर्ना थ्योरी विल बी प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग विच पीरियड? अर्ली वैदिक पीरियड तक सिर्फ कौन सी थ्योरी रहेगी? वर्ना थ्योरी. एंड स्लोली फ्रॉम लेटर वैदिक पीरियड वर्ना विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू व्हाट? कास्ट. क्योंकि बाय एक्सिस पे क्या है? रिस्ट्रिक्शंस. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे वर्ना पे रिस्ट्रिक्शंस लगना शुरू हुए वैसे वैसे वर्ना स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू व्हाट? कास्ट. सो व्हाट इज द इक्वेशन? V plus R gives you
C. Now look at the slope. What can you get from the slope? That restrictions are increasing over a period of time and they will reach the peak during which period? Gupta period. Gupta period में सबसे ज्यादा restrictions होंगे caste system में. Is it okay or not? So Varna theory तो सिर्फ theory में रह गई and that too only during the time of early Vedic period. जैसे ही later Vedic period start हुआ Varna के ऊपर क्या लगना शुरू हुए restrictions, तो Varna किस में convert हो गया? Caste. So over a period of time the caste system will intensify itself. Okay all of you? Now let us see the 5 main caste. There are Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudras and untouchables. ये 5 main caste हैं. इसमें से देखिए ये तो मैंने आपको बताया they are upper caste. They are also considered as what? Twice born. You know twice born? Born twice. First birth, natural birth. The second birth is sacred birth. Sacred birth. On the day they wear Janeyu, the sacred thread. Is it okay? So they are born twice. ये दो जो caste हैं, ये lower caste हैं. They are lower caste. Can they wear sacred thread? No, they cannot wear sacred thread. अब देखिए दोनों ही low हैं, but इन दोनों low में भी कौन सी lowest है? Untouchables. Now what is the difference between the two? Untouchables suffer from stigma of untouchability, while Shudras do not suffer from stigma of untouchability. Shudras do not suffer from stigma of untouchability. Are you getting or not? Shudras in modern times are also called as OBCs. But all OBCs are not Shudras, that we have to keep in mind. But majorly Shudras modern times में क्या कहलाते हैं? OBCs. Untouchables in modern times are called as SCs, scheduled caste. या दलित भी कहा जाता है इनको, दलित. अब the caste system is hierarchical. Hierarchical का मतलब है ऊंच नीच. Hierarchical means status variation is there. The highest status being enjoyed by whom? Brahmins, and the lowest status is of untouchables. Are you getting this point? Yes. Now occupation wise अगर हम देखें, occupation अगर देखें, Brahmins are priests, Kshatriyas are warriors, Vaishyas are traders. You know this. Now what is the occupation of Shudras? इनकी दो occupation है. They mainly work as what? Peasants, and they are also artisans. Peasants हैं या फिर artisans हैं. Untouchables mainly do occupations related to waste, cleaning the waste. Cleaning the waste. जैसे cleaning waste मतलब कुछ भी dead body, cut nails, feces, urine, जो भी body waste है उससे related जितना काम है वो कौन करते हैं? कौन करते हैं? Untouchables. Okay, this picture is getting clear all of you. अब देखिए. Now write caste system definition. Caste system की definition क्या है? Point number 1. Caste is a form of social stratification. Caste is a form of social stratification. Now what is social stratification? You know strata? Layers. Stratification is arrangement of these layers. तो लिखो bracket में social stratification means arrangement of different sections of society. Arrangement of different sections of society according to a fixed criteria. Different sections यहाँ कैसे हुए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रस. ये different sections हुए. इनको हम कैसे कर रहे हैं? Arrange कर रहे हैं. इस arrangement pattern को हम बोलते हैं social stratification. And caste is a form of what? Social stratification. So what is the criteria? Point number 2. The criteria is इसके basis पे Brahmins are highest and untouchables are lowest. The criteria is principle of purity and pollution. Principle of purity and pollution. Underline these two keywords: purity, pollution. Have you heard about these terms? Purity, impurity. देखो लिखो caste closer to purity. Next point करके भी लिख सकते हैं. Caste closer to purity are given upper caste status. Are given upper caste status. Closer to pollution are given. Closer to pollution are given lower caste status. Is it okay or not? So who is the purest? Brahmins. And who are the most impure? Untouchables. Are you clear or not? Now write what is purity and what is pollution. लिखो what is purity. Purity क्या क्या है? लिखो cleanliness is mainly associated with cleanliness. Avoiding any contact with waste. Avoiding any contact with waste. चाहे वो खुद का ही waste हो. चाहे वो खुद का ही waste हो. It doesn't matter. You have to avoid any contact with what? Waste. Then third point, purity. Purity में और elements लिखिए. Respecting cow. Respecting cow. तो cow and cow products are all considered as pure. चाहे दूध हो जाए, चाहे वो दही हो, चाहे वो घी हो, cow चाहे गोबर ही हो, है ना? All are considered as what? Pure. So respecting cow, comma, eating vegetarian food, comma, no consumption of alcohol. Nobody is pure. No consumption of alcohol. Okay or not? ये सारे किसके elements हैं? Purity. So if you are pure, you are expected to follow these purity elements. जैसे you have to respect cow, you don't have to eat non-veg, you don't have to consume what? Alcohol. ये सारी चीजें आपको follow करनी है अगर आपको क्या रहना है? Pure. देखो elements of impurity. Elements of impurity. Impurity में सबसे important चीज है any contact with waste. Any contact with waste. जैसे waste like feces, human feces, comma urine, feces, urine, blood.
ब्लड, स्पिट, स्वेट, ठीक है ना, इनसे कोई भी कॉन्टैक्ट हुआ तो यू आर कंसिडर्ड एज व्हाट, इम्प्योर, यू विल बिकम इम्प्योर. डेड बॉडी, कॉमा डेड बॉडी, यू विल इंक्लूड डेड बॉडीज. तो धोबी is considered as untouchable work. Why? He comes in contact with what? Sweat. People working in leather industry are considered as untouchables. They are called as tamars. Why? अरे भाई, leather industry में they are removing the skin of dead animals, dead body से contact कर रहे हैं. People working in cremation grounds will be considered as untouchables because they are dealing with what? Dead bodies. आया समझ में? तो ये सारा any contact, comma, then you write eating non-vegetarian food, consumption of alcohol, consumption. ठीक है, समझ में आ रहा है? इन सबको क्या समझा जाता है? Impure. Next, you write point. Pure and impure must remain separate from each other. Pure and impure must remain separate from each other. The two should never mix. The two should never mix with each other. Why? Because impurity is transferable. Because impurity is transferable by touch. So impurity is not only transferable, it is transferable by touch. So impurity has the power to make pure things as impure. While purity doesn't have this power. Purity cannot make impure things pure. Are you clear or not? इसीलिए impure को दूर रखना है किससे? Pure से. तो and impure इन दोनों को अलग रखना है. अब इन दोनों को अलग रखने का काम करता कौन है? Caste restrictions. मैंने बताया ना, caste has what? Restrictions. So caste लिखो, caste restrictions ensure that pure remains separate from किससे separate रहेंगे? Impure. जैसे एक restriction, upper caste member should not marry in lower caste, है ना? Then upper caste member should not have food with lower caste. So the purpose is to ensure that pure doesn't mix with impure. Clear all of you? चलिए, तो ये काम करते हैं caste restrictions. अच्छा, pure is also considered as sacred. Sacred means anything closer to God. Pure is considered as sacred. और अगर ये sacred है, तो this should not become impure at any cost. Next, now you write features of caste system. Features of caste system. First feature, hierarchy. First feature is hierarchy. लिखो, different segments of society. Segments यहाँ पे मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास. Different segments of society are arranged in hierarchical order. Hierarchy brings inequality. Hierarchy also means sorting. You know sorting? Ascending order, descending order, sort करना किसी order में. So hierarchy brings inequality. Bracket में आप लिख सकते हैं status difference. Hierarchy brings status difference. किसका highest status है? Brahmins. Lowest status untouchables. दूसरा है feature occupational restrictions. Occupational restrictions. So लिखो, caste does not allow change of occupation. Caste does not allow change of occupation. Occupation is fixed by birth. And what will be the occupation? Hereditary occupation. Occupation will be hereditary in nature. So whatever is the occupation of my father, I have to continue with the same occupation. No change of occupation is allowed. That means caste system does not allow, क्या कीवर्ड है? Mobility. ये allow नहीं करती caste system. Third feature is endogamy. Endogamy. क्या होता है endogamy? Yes, marriage should happen within the same caste. Marriage should happen within the same caste. ये भी एक rule है important. Endogamy. अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सुना है? Yes, very good. Dr. B. R. Ambedkar believed. देखो believed. अच्छा, is endogamy principle followed now also or not? People try to at least try first to marry within their same caste. Is it okay? ये आज भी follow होता है. Has this rule broken down or not? Urbanization, globalization, migration की वजह से ये rule तो break हो चुका है काफी हद तक. But ये rule अभी तक चल रहा है. Is it okay? And if this rule is continuing till now, Dr. B. R. Ambedkar says this is the biggest factor for continuity of caste system in India. Continuity of caste system in India. कि आज की डेट में कास्ट सिस्टम अभी तक इसीलिए कंटिन्यूटी रखा है बिकॉज ऑफ दिस रूल ऑफ एंडोगेमी. हैव यू सीन मैट्रिमोनियल लाइंस एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स? दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कास्ट कॉलम्स. ब्राह्मण गर्ल सीक्स अ ब्राह्मण बॉय. आजकल वेबसाइट्स भी बन रही हैं कास्ट के हिसाब से. castematrimony.com, बढ़िया matrimony.com. एंडोगेमी में एक एक्सेप्शन अलाउड है. व्हाट इज अलाउड? अनुलोम मैरिजेस आर अलाउड. अनुलोम मैरिजेस का मतलब है एन अपर कास्ट बॉय कैन मैरी अ लोअर कास्ट गर्ल. upper caste boy can marry a lower, but upper caste का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण will marry a शूद्र girl. No. They will go only one step down. अगर बिल्कुल ही मैच नहीं मिल रहा है, first they will try to find the match within the same caste. अगर बिल्कुल मैच नहीं मिल रहा है, लड़के की उम्र होती जा रही है, so then they will go one step down. They will try to find the girl in the lower caste. Is it okay? But only up till Kshatriyas. अगर उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो लड़के को कुंवारा ही मरना पड़ेगा. But अनुलोम marriages are allowed. प्रतिलोम is not allowed. प्रतिलोम means
upper caste girl cannot marry a lower caste boy. That means upper caste girl has lots of has very limited choice or not? बताओ मुझे, lots of गलत बोल दिया. The upper caste girl has very limited choice. Agreed? Limited choice क्योंकि she has to marry. And then when the parents will find suitable match, they will try to fix the marriage, which results in a practice called dowry. Child marriage. The girl has to be married as soon as you find a suitable match. तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, बट अभी आप क्या लिखिए, प्रतिलोम बस, not allowed. Fourth is civic restrictions. Civic restrictions and religious restrictions. Civic restrictions में लिखिए, ये restrictions कौन किसके ऊपर लगा रहा है? Upper caste is putting these restrictions on lower caste. What restrictions? Limited access to, लिखो, limited access to community resources like drinking water wells, bathing ghats, grazing grounds. इन सब पे इनका क्या है? लिमिटेड एक्सेस. किसका लिमिटेड एक्सेस? लोअर कास्ट. अरे ओके और नॉट? नाउ सिविक रिस्ट्रिक्शंस में एक और पॉइंट आएगा, नो एक्सेस टू एजुकेशन फॉर लोअर कास्ट. तो जब लोअर कास्ट को एक्सेस टू एजुकेशन ही नहीं है, दैट मींस लोअर कास्ट विल रिमेन एजुकेशनली बैकवर्ड. दिस इज अ की पॉइंट है. दे हैव रिमेन्ड एजुकेशनली बैकवर्ड. रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस देखिए, नो एक्सेस टू टेंपल्स एंड रीडिंग और राइटिंग सेक्रेड थ्रेड. reading or writing sacred text. So lower caste cannot even listen, read or write sacred text. अरे okay or not? कोई भी sacred text, पुराण भी हो गया कोई, वो भी नहीं पढ़ सकते lower caste. Now listen carefully all of you. Now look at these restrictions. Because of these restrictions, the lower caste has remained which backward? Socially backward. तो ये दो keywords मैंने आज आपको दिए. पहले ये रहे हैं educationally backward, दूसरे ये कैसे backward हैं? Socially backward. Restrictions की वजह से. Now, have you heard of socio-religious reformers? किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? were fighting against these. अरे सती से बाहर आ जाओ. were fighting against these restrictions. कौन से restrictions? Civic and religious restrictions. ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, जितने भी समाज मूवमेंट्स थे, इंडियन रेनेसां भी कहते हैं इसको. The main purpose was to fight against these restrictions. जैसे अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एंडोगैमी नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए लोअर कास्ट को, ऑल दिस थिंग्स. तो रिफॉर्मर्स का ये रोल था. एंड fifth point you write is restrictions on interdining and acceptance of food. Interdining का मतलब upper caste cannot interdine with lower caste, नहीं तो purity और impurity mix हो जाएगी. Is it okay or not? Purity and impurity will get mixed even by touch. So how can you interdine? That is not possible. Will upper caste member accept food from lower caste? No, not at all. पर उसमें भी रूल होता है, कच्चा फूड, पक्का फूड, वो सब हमें नहीं देखना है. नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, कास्ट का सिक्स पॉइंट. कास्ट सिस्टम ने एक सिस्टम इवॉल्व किया था, दैट इज जजमानी सिस्टम. सो गिव हेडिंग, सो राइट सिक्स पॉइंट, जजमानी सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ से आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. टुडे आई एम नॉट वेल, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन क्लास टिल. ओके, थैंक यू.